Number third method, that is called the speed. Speed, what is speed? To move one place to another in a shortest possible timing with the greatest possible velocity. The types of speeds are given. Questions बन सकता है, probabilities है. 5 types of speeds are given: reaction speed, movement speed, acceleration speed, locomotion speed, and the speed endurance. सबसे पहले देखते हैं movement speed. Reaction speed, this is the first now. चलिए reaction speed से बात करें. How you can react on the response, this is called the reaction ability or the speed of the body. How you can react on the respond, this is called the reactions. Movement speed, how you can execute the whole body strength in the movement. How you can execute the whole body strength in the movement is called the movement speed. Whereas the acceleration speed, changing the velocity, how you can change the velocity or the speed, this is called the acceleration ability. Studying the 100 meter, what we are required, acceleration abilities are required. Whereas the locomotions, word is different here. In the biology, in the physics, I think the word is different, but here the word is different. What is locomotion? Maintain the maximum speed for a maximum possible timing. This is called the locomotion's abilities of the body. Maintain the maximum speed of the body for a maximum limit timing now. 100 meter speed, if you can maintain for a 400 meter, this is the locomotion speed of the body. This is maintain the maximum speed. क्योंकि 100 मीटर स्पीड जो maximum speed है उसको अगर हम लंबे समय तक maintain कर रहे हैं, this is called the locomotion speed of the abilities. Whereas the speed endurance, speed का endurance, speed को कितना लंबे समय तक perform करते हैं, दोनों में फर्क है. वो maximum speed को maximum time possible timing था, but ये speed के variation होते हैं. 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप 5 घंटे, this is the stamina of yours. So this is the different, दो difference है दोनों में. So locomotion and speed, these are the 5 types. इन पर किसी भी एक टाइप का क्वेश्चन 1 मार्क्स में बन सकता है. हमें हर टाइप जो बुक में लिखे हुए हैं वो चूंकि स्पेसिफिक है, हमें याद भी रखने हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. देयर आर द 2 मेथड टू डेवलप द स्पीड ऑफ द बॉडी, एक्सेलरेशन एंड द पेस रनिंग. बोथ द वर्ड्स वी विल यूज इन डेली लाइफ. फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़े होंगे एक्सेलरेशन और द पेस. एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंजिंग द वेलोसिटी. 100 मीटर इज द एग्जांपल ऑफ द बोथ 2 रेसेस. 100 मीटर की एग्जाम्पल में आप राइटिंग सेक्शन में इतना लंबा तो ऐसे एग्जाम्पल को यूज करते हुए ही लिख सकते हैं. 100 मीटर इज द एग्जाम्पल ऑफ बोथ 2 रेसेस. इन द स्टार्टिंग ऑफ द रेस द एथलीट आर चेंजिंग द स्पीड और वेलोसिटी ऑफ द बॉडी. दिस इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन रन. वो क्या है? एक्सेलरेशन रन का ये तो फेज है. बट आफ्टर 20 or 30 or 40 मीटर, when the athlete or the sport person can have the 100% speed or the optimum speed of the body, this phase throughout the end we will maintain the same phase till the end. So this phase is known as a pace running. In the pace we will never change the velocity of the body. एग्जाम्पल को यूज करते हुए ही डिस्क्रिप्शन में हम इतना कुछ लिख सकते हैं. जनरली इन दोनों में क्या होता है? स्टार्टिंग करने के तरीकों में अंतर है, वेरिएशन से स्टार्ट करने के तरीकों में, बट अल्टीमेटली सेम वर्कआउट विल परफॉर्म इन दीज टू. नाउ आप अपनी लैंग्वेज में इनको इस प्रकार से एक्सप्लेन कर सकते हैं. एक्सेलरेशंस ओनली द सिटिंग स्टार्ट इज अलाउड. एक्सेलरेट करना है तो सिटिंग इन द स्टैंडिंग बोथ द स्टार्ट. बट पेस क्या होता है? ओनली द स्टैंडिंग स्टार्ट वी कैन यूज इन दिस. नाउ स्टैंडिंग से ही पॉसिबल है पेस को डेवलप करना. पेस जो है वो सिटिंग स्टार्ट में डेवलप नहीं हो सकता है. सो ये स्टैंडिंग, सिटिंग इन द स्टैंडिंग बोथ द स्टार्ट वी कैन यूज इन द एक्सेलरेशन, विद द पेस ओनली द स्टैंडिंग स्टार्ट वी कैन यूज. नाउ इन दोनों में क्या होता है? हमें लैंग्वेज एक ही प्रकार का थोड़ा चेंज करते हुए लिखना है एग्जाम में. शॉर्ट डिस्टेंस आर गिवन, डिस्टेंस आर वेरी लेस, so we can use the 100% potential or the speed to complete a task. It may be the 10 to 15 or 20 meter. This is the small distance, so we can use the 100% speed or potential to complete a task. But revision or the repetitions, more and the more will be done. In a single day, 15, 20, 25 repetitions will be done. जब हम एक ही बार काम को, एक ही टास्क को लगातार 15 से 20 बार रोजाना डेली परफॉर्म कर रहे हैं तो क्या होगा? अल्टीमेटली इट जनरेट द एक्सप्लोसिव पावर्स इन द बॉडी. It will help to generate the speed of the body. Teachers or the trainer, they will give a start at the starting point. So reacting abilities of the mind will develop. It will also to develop the speed of the body. He used here.
तो डिस्क्रिप्शंस में हम अपनी लैंग्वेज में इनके प्रैक्टिकल फॉर्मेट्स को यूज कर सकते हैं। इसमें प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को अगर हम यूज कर रहे हैं एग्जाम में तो इस तरह के लैंग्वेज को हम बना सकते हैं। हम समझ करके इन टॉपिक्स को बड़े आराम से अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर सकते हैं। इन तरीकों को यूज करते हुए भी आराम से काम चलता है। बट व्हाट वी आर रिक्वायर्ड द नेम ऑफ दीज टू मेथड इन द एग्जामिनेशन डिस्क्रिप्शंस वी कैन प्रिपेयर वेरी वेल, वी कैन राइट इन योर ओन लैंग्वेज। ये लैंग्वेज अगर आप जाते हैं तो बड़ी ईजी होती है, क्योंकि स्कूलिंग के दौरान हम लोगों ने हर चीज हर एक्टिविटीज को परफॉर्म किया हुआ है। सो उनकी इमेजिनेशन से हम इन वर्ड्स को वहां पर उन एक्टिविटी के बेसिस पर एग्जाम में एक्सप्लेन कर सकते हैं। एंड दिस इज द इजी पार्ट फॉर यू। नाउ द फोर्थ नंबर सेक्शंस, फोर्थ नंबर दैट इज द फ्लेक्सिबिलिटी। Flexibility definition, types and the methods of improvement is improve flexibility is given now. 5 marks में questions बन चुका है, आ चुका है। 3 marks and the 1 marks में भी क्वेश्चंस आराम से बनता है। यहाँ पर क्वेश्चंस किस प्रकार से एक्सप्लेन पूछा हुआ है, देखिए एक छोटे क्वेश्चन से, कभी कभी स्मॉल टॉपिक से अगर मेजर क्वेश्चन बन जाए तो यहाँ प्रॉब्लम होती है कि हम किस प्रकार से लिखें। तो मैंने आपको तरीके बताए हुए हैं, 2 मेथड जो बताए थे राइटिंग के, कि एक बार को घुमा के 3 बार 2 बार लिखना, और एक होता है प्राइमरी सेक्शन से एक पूरा का पूरा सेंटेंस और फ्रेज बनाना। इन 2 मेथड को यूज कर लें, क्योंकि स्मॉल टॉपिक से जब मेजर क्वेश्चन बनेगा तो हमें वर्ड की रिक्वायरमेंट है कि वर्ड हम किस प्रकार से लिखें एग्जाम में। तो वो तरीके जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए उनको भी यूज करते हुए अपना आंसर बनाइएगा। बट हर जगह नहीं, ये नहीं कि आप हर पॉइंटों को उसी प्रकार से एक्सप्लेन करें। तो यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी से कुछ क्वेश्चन डिफरेंट प्रकार से भी पूछा हुआ है, तो उनका आंसर भी हमें उस टेक्निक को यूज करते हुए निकालना है। Flexibility is the ability of joints to move in maximum range. In other words, it is the ability to execute movement with greater amplitude or range. मतलब greater range में extend करना, this is called the flexibility. It is a 2 type, active and the passive. With the help of the partner or without the help of the partner. If you are performing the activities, this is called the active and the passive. भाई active involvement है आपका और passive है without the help or with the help. With the help of the partner, passive है, without the help. If you are performing well, ये आप कर रहे हैं तो क्या हुआ, ये active है, so this is called the active and the passive. It is a 2 type, 2 प्रकार के हैं, but there are the 3 methods to develop the flexibility of the body. First method, elastic method. Number 2nd method, slow stretch in the whole method. Number 3rd, static stretching method. Number 4, dynamic stretching method. There are the 4 methods to improve the flexibility. अब इनके लिखने के तरीके क्या होते हैं, क्योंकि बुक्स में the word descriptions are not given. 3 to 4 lines are given in the booklet about these 2 terms in the booklet. अब क्वेश्चन 2 प्रकार से बनते हैं। क्वेश्चन किस प्रकार से 5 मार्क्स में पूछा हुआ है, डिफाइन अ टर्म फ्लेक्सिबिलिटी, एक्सप्लेन एनी वन मेथड्स या एक्सप्लेन द मेथड्स टू इंप्रूव द फ्लेक्सिबिलिटी। 5 मार्क्स में जब ये क्वेश्चन पूछा हुआ है तो 1 मार्क्स में डिफाइन अ टर्म फ्लेक्सिबिलिटी और एक्सप्लेन द मेथड्स टू इंप्रूव द फ्लेक्सिबिलिटी। इट मींस 4 मार्क्स में ये पूछे हुए 4 मेथड, आपके पास 4 मेथड है तो 1 मार्क की टर्म हो गई। हम आराम से एग्जाम में लिखें तो लिख सकते हैं, जो कि 3 to 4 लाइन आर गिवन इन द बुकलेट। अगर आप उनको सिर्फ रट्टा मार के कॉपी करते हैं तभी अपना काम चलता है। बट प्रॉब्लम कहां आती है, प्रॉब्लम यहां आती है कि एक बार क्वेश्चन पुट अप हुआ है, डिफाइन अ टर्म फ्लेक्सिबिलिटी, एक्सप्लेन एनी वन मेथड्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूवमेंट। अब देखिए मार्क्स का वेटेज चेंज हो गया, 1 मार्क्स में डिफाइन, 3 मार्क्स में नहीं, 4 मार्क्स में आपको सिंगल मेथड को एक्सप्लेन करना है। एटलीस्ट हमें वर्ड की रिक्वायरमेंट है, 3 to 4 लाइन्स आर नॉट इनफ टू इन दिस आंसर्स। तो हमें यहाँ पर वो भी ध्यान रखना कि हम किस प्रकार से वर्ड को एक्सीड करते हुए एक सिंगल मेथड को 2, 3, 4 पेज में एक्सप्लेन कर दे, वो भी बारीकियां हमें ध्यान रखनी है। चलिए आई विल एक्सप्लेन। इमेजिनेशंस में आप लगिएगा ब्लास्टिक मेथड, बम ब्लास्ट, इस वर्ड से लिया ब्लास्टिक मेथड। ब्लास्टिक का मतलब ये नहीं होता कि बॉडी में टाइम बम लगा के उड़ा दो, नहीं, किस प्रकार से ब्लास्ट द मूवमेंट फोर्सफुली, वी विल एग्जीक्यूट द मूवमेंट इन दिस नाउ। Suppose if you are performing the leg stretching, smooth corridors are available in the floor and the smooth floors are available in the corridor. जब आप कॉरिडोर में जाते हैं, रनिंग कर रहे हैं और स्किट करते हैं, when you will skit or exceed the legs forcefully, when you will skit तो क्या होगा, exceed the legs forcefully, when you will reach on your maximum point, तो maximum point पर क्या हो रहा है, the force is applied, और जब force applied हो रहा है तो क्या होगा, range will open, regular practices can improve the flexibility। arm stretching कर रहे हैं, when you will jerk it now, at the end क्या हो रहा है, highest point पर jerk is applied, so यहाँ क्या होगा, range will open, regular practices can improve the flexibility of the joint। this is called the blasting method। blast the movement, it means forcefully execute the movement। पूरा मूवमेंट क्लियर। अब इसमें वर्ड हम लिखते हैं, विद द हेल्प ऑफ दीज 2 एग्जांपल वी कैन राइट द लैंग्वेज इन द एग्जामिनेशंस। हम एग्जाम में इन 2
एग्जाम्पल को भी यूज कर ले तभी हमारा आंसर डिस्क्रिप्शन में बन सकता है। लेकिन अगर 5 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाए अबाउट दिस सिंगल टर्म, तो व्हाट यू विल राइट, तो अपनी स्कूल लाइफ को याद कीजिएगा। अगर आपने कभी स्ट्रेचिंग के दौरान ऐसी एक्सरसाइज की होंगी तो हम क्या करें, इन दिस मेथड सर्टेन पॉइंट्स शुड रिमेंबर। नंबर 1, वार्मिंग अप इज रिक्वायर्ड बिफोर द एक्टिविटीज। वी आर रिक्वायर्ड द वार्मिंग अप. Warming up decreases the chances of injuries, it improves the flexibility, so we are required. It will help in this event. So number 1 point, warming up is required. Number 2, untrained persons cannot perform this method. Only the trained persons can perform this method. Trained persons ही execute होता है ये method, उनके ऊपर भी untrained cannot. Whereas number 3, under the guidance of the trainer or the coach, we will perform this method. We are required the expert guidance of the trainer or the coach. So number 4 point क्या बनेंगे, in this method there is a chance of the injuries, maybe the injuries can be done on the last range of the body or the joints. Some pressures will apply. Suppose ligaments will stretch or overstretch and they get tear into bar, so injuries can be found on the last point. So injuries है. Whereas in some games we are required these methods. You can write the name of these methods: ice skating, ice hockey, बैडमिंटन वी आर रिक्वायर्ड दिस मेथड, जिम्नास्टिक वी आर रिक्वायर्ड दिस मेथड. सो यू कैन पुट द एग्जांपल ऑफ दिस नाउ. मतलब 5 पॉइंट बनाए. फर्स्ट मेथड क्या था, वार्मिंग अप इज रिक्वायर्ड, अनट्रेन्ड और द ट्रेन्ड, अनट्रेन्ड पर्संस कैन नॉट, ट्रेन्ड पर्संस कैन परफॉर्म दिस मेथड. ये सब कुछ पॉइंट जो मैंने एक्सप्लेन किए उनको पॉइंट फॉर्म में बनाया, उनको एक्सप्लेन किया अपनी लैंग्वेज में, तो हम बड़ा अच्छा आंसर एक सिंगल मेथड को एक्सप्लेन करते हुए भी निकाल सकते हैं. ये विजडम रखिएगा, क्योंकि एक सिंगल मेथड जब 4 मार्क्स 5 मार्क्स में आएगा तो हमें लैंग्वेज को की रिक्वायरमेंट होगी. सो ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस और हम किसी के बेसिस पर अपनी लैंग्वेज को हम एग्जाम में बनाते हुए लिखेंगे ताकि एग्जाम में हम बढ़िया आंसर बना पाए. दिस इज द फर्स्ट मेथड. सेकंड मेथड, स्लो स्ट्रेच एंड द होल्ड मेथड. स्ट्रेच, स्लो 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 व्हेन यू विल रीच ऑन योर मैक्सिमम पॉइंट. आप जब स्ट्रेचिंग करें स्लो 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 स्लो, बट व्हेन यू विल रीच ऑन योर मैक्सिमम पॉइंट होल्ड इट. नाउ ऑन द होल्डिंग position 2 conditions are applying. Own body weight as the pressures are applying, or you can use the external resistance or the power or the persons. Now use the partner or the weight on the last point. Apply the overload and the conditioning principles. Overload क्या होता है, simple to complex form में load improve चाहिए and the conditioning require the timing. In the starting it may be 2 seconds is your holding or bearing capacity on the highest range. Improve the timing step by step. 1 week तक 2 सेकंड किया, फिर नेक्स्ट वीक में क्या किया, टाइम को इम्प्रूव कर दिया, 3 सेकंड कन्वर्ट किया, फिर 3 सेकंड पर आपने कंडीशनिंग की 1 वीक तक, अगेन इम्प्रूव द टाइमिंग 4 सेकंड. आफ्टर द 3 to 4 month when you will reach on the 10 to 12 second, it means you have opened the flexibility of the joint. This is called the slow stretch and the hold method. वही सब कुछ. In this method, certain points you will remember. Number 1, warming up is required before the crease. Number 2, untrained or the trained both can perform, because warming up is यहाँ पर requirement है. Untrained or the trained both can perform this method. There is no chance of injuries under the guidance of the trainer or the coach. Number 5, in every game, in a growing player, we will use this method. मतलब growing players पर जो initial start करते हैं, they are called the growing players, or we can use this method initial level. So ये पॉइंट बनाए, उन्हीं पॉइंटों को रिफॉर्म किया और लैंग्वेज में चेंज किया, अपना आंसर हम बना पाएंगे. क्या और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा हुआ है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट एग्जाम में वही है, और उस पर ही हमें अपना आंसर किस प्रकार से बनाना आना चाहिए. बुक्स में टॉपिक को कितना एक्सप्लेन किया हुआ है, क्या किया हुआ है, उन सबसे कोई मतलब नहीं है, पर एग्जाम में जब क्वेश्चन बनेगा तो वहां पर हम अपना आंसर बहुत अच्छा सा बना पाए, और यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी एग्जाम का. ना अब आता है ट्रांसफर ऑफ नॉलेज और लर्निंग की बारी. चूंकि आई हैव एक्सप्लेन दिस टेक्निक इन द प्रीवियस क्लासेस. ट्रांसफर ऑफ नॉलेज, अगर आप ट्रांसफर ऑफ नॉलेज करें तब ब्लास्टिक द मोमेंट इज विजिबल, सो डायनेमिक है. सो डायनेमिक में पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया, अपने लैंग्वेज को बनाते हुए हम ट्रांसफर कर सकते हैं. वो स्लो स्ट्रेच इन द होल्ड, व्हेन यू आर होल्डिंग तो क्या हो रहा है, स्टैटिक हो रहा है, सो ये स्टैटिक हो रहा है. स्टैटिक में सेम लैंग्वेज को यूज किया, वहां पर यूज किया. अगर हम 2 मेथड की लैंग्वेज को यहाँ 2 में यूज कर लें तो अपना आंसर बन जाएगा. बिकॉज आप देखिए 34 मेथड ऑलमोस्ट आर गिवन इन द टू इंप्रूव द फ्लेक्सिबिलिटी, और राइटर ने काम एक ही किया हुआ है, क्योंकि मूवमेंट 2 ही है, स्टैटिक या डायनेमिक.
मूवमेंट दो ही है और इन्हीं दो मूवमेंट को अलग अलग वर्ड्स में अलग अलग प्रकार से डिफरेंट प्रकार से यूज करते हुए एग्जाम में बुक्स में लिखे हुए हैं। तो ये 4 मेथड जिनमें 2 याद करते हैं और 2 हम सेपरेट अपनी मेमोरीज में रखते हैं और उन्हीं को यूज करते हुए यहाँ अपना आंसर बनाते तो अपना काम चल जाता है। डिफरेंट मेथड्स आर गिवन इन द डिफरेंट बुक्स नाउ, लेकिन अगर आप अपनी मेमोरीज में 4 मेथड भी यूज कर लें तभी अपना काम चलता है। एग्जाम में सपोज करो बाय नेम पूछ दिया तो नो नीड टू वरी, स्टैटिक और डायनामिक 2 मूवमेंट होते हैं, इन्हीं मूवमेंट को आपको वहां पर यूज करना है, उनको एक्सप्लेन करने में अपना काम हो जाता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू भी। नो नीड टू वरी अबाउट दैट, लिखना आना चाहिए। डोंट बी होपलेस इन द कंडीशंस कि सर ये मेथड तो बुक में था ही नहीं, इस पे क्वेश्चन कैसे आ गया, आ सकता है, जो कि सब्जेक्ट में बलास्टिक फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूवमेंट मेथड दिए हुए हैं और फ्लेक्सिबिलिटी में कितने ही सारे मेथड्स हैं जो किसी बुक में सपोज को लिखा हुआ नहीं है। तो अभी मैंने आपको ट्रिक और टेक्निक बताई हुई है कि वट एवर द कंटेंट्स आर गिवन इन द बुकलेट अबाउट द टर्म, इफ यू विल यूज, तो वही टेक्निक हमें यूज करना है कि वट एवर द कंटेंट्स, जो भी कंटेंट्स यहाँ पर दिए हुए बुकलेट में उन कंटेंट्स को यूज करते अपना आंसर हम बनाएंगे ताकि मार्क्स बड़े आराम से मिल जाए हम लोगों को। सो दिस इज द 4th नंबर टॉपिक, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज द कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज, डेफिनेशन एंड इट्स टाइप। 1 मार्क की टर्म पर क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटीज है, 5 मार्क्स में, 3 मार्क्स में, हर वैरायटी के क्वेश्चंस यहां से बन चुके हैं। कोऑर्डिनेशंस, आई फुट, आई हैंड, होल बॉडी कोऑर्डिनेशंस, मल्टीपल कोऑर्डिनेशंस वी आर रिक्वायर्ड। कोई भी एक डेफिनेशन, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज आर दोज एबिलिटीज ऑफ एन इंडिविजुअल्स व्हिच एनेबल द इंडिविजुअल टू डू वेरियस रिलेटेड एक्टिविटीज प्रॉपर्ली एज वेल एज एफिशिएंटली, मतलब प्रॉपर्ली और एफिशिएंटली अगर हम कोई भी काम को कोऑर्डिनेशन वे में कर रहे हैं तो दिस इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज। 7 टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज आर गिवन, ओरिएंटेशंस, कपलिंग, रिएक्शन, बैलेंसिंग, रिदमिक, एडेप्टेशंस एंड डिफरेंशिएशन। ये 7 टाइप्स की कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज हैं और इन सब के डिस्क्रिप्शन हमें प्रिपेयर भी करने हैं क्योंकि इन पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनेगा और 5 मार्क्स और 3 मार्क्स में क्वेश्चंस बन चुका है। विद द हेल्प ऑफ द एग्जांपल वी कैन मेक द लैंग्वेज, बट हमें कोऑर्डिनेशंस हर जगह याद करना। ओरिएंटेशन, कोऑर्डिनेशन, सिंगल लाइन के डिस्क्रिप्शन मार्क कीजिए, उनको याद कीजिएगा। इट इज द एबिलिटी टू डिटरमाइन द position of the body and its part in time and the space in relation to the gravity। सिंगल लाइन के डिस्क्रिप्शन हमें आराम से मिल जाते हैं अपनी बुक में और उनको मार्क करते हुए लिखना है। बहुत सिंपल से वर्ड्स है। कपलिंग मतलब आई फुट, आई हैंड कोऑर्डिनेशन, द कपलिंग, चूंकि पेयरिंग हो रही है, इट इज द एबिलिटी टू कंबाइन द मूवमेंट ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट, मतलब डिफरेंट बॉडी पार्ट्स का कंबाइन मूवमेंट, दिस इज कॉल्ड द कपलिंग। मतलब 2 बॉडी पार्ट्स का कंबाइन मूवमेंट, दिस इज कॉल्ड द आई फुट, आई हैंड। फुटबॉल, हॉकी जब हम खेलते हैं तो वी आर रिक्वायर्ड दीज coordinations in the body. Now, next, reactions. Reacting abilities. How you can react on the response is called reactions ability or the coordinations. ये हमारी coordinations की abilities है. It is the ability to react immediately or quickly and the effectively to a signal. कोई भी signal पर effectively quickly respond करना. This is called the reactions. Simple and the complex. It is the 2 types. They are the very simple now. Balancing. How you can balance the body? It is the ability to maintain balance during the complete body movement and to regain balance quickly after the balance distributing movement. How you can balance the body? Muscles and the nerve coordinations are required before and after the movement now. So this is called the balancing abilities. Now, rhythmic, dancing, aerobics, we are required a rhythm, matlab flow. It is the ability to observe or perceive the rhythms of a movement and to do the movement with the required rhythm now. Generally in a dancing aerobics we are required the rhythmic. Rhythm का मतलब flow. Dancing की तरह जो लय frequency जो में requirement होती है, this is called rhythmic coordinations. Adaptations. It is the ability to adjust or change the movement effectively on the basis of changes or anticipated changes in the situations. मतलब फ्रिक्वेंटली सपोज करो क्योंकि रिस्पॉन्ड करना, चेंजेस, मूवमेंट को चेंज करना, दिस इज कॉल्ड एडेप्टेशंस। मतलब फ्रिक्वेंटली वी आर लर्निंग हियर, सो दिस इज कॉल्ड द एडेप्टेशंस एबिलिटीज। एक सिग्नल मिलता है वैसे ही अपनी बॉडी का मूवमेंट चेंज करना, सो दिस इज कॉल्ड द एडेप्टेशंस abilities. Differentiations abilities, it is the ability to achieve a high degree of accuracy and economy of separate body movement and movement phases in a motor actions. Means descriptions we can prepare well. You have to prepare well for the examination point of view, because any one term can ask for a 1 marks in the objective,
or 3 marks and the 5 marks questions was also put up about this topic now. So you have to prepare well. 7 types of the coordinative abilities are unchangeable terms, and you have to prepare all these 7 types of coordinations. This is the end of the chapter number 10 now. All the contents which are written in this chapter, all they are called unchangeable terms, strength, speed, whatever. So they are the unchangeable terms. Unchangeable terms are written in these topics now. The focusing are required. The language is required in the examinations. So I think so. General opinions, if you write the general opinions about these now, because define the term strength, general words, if you are writing in the examinations, marks will not be given by the examiner. So this is the technical term based unit now, and you have to, or I think so, all the classroom steps will help you to prepare the chapter very easily, or it's a timing method now. So this is the end of this chapter or the syllabus now. Last, practicals. At the end of the syllabus, I have told you about we will discuss about the practicals. Naturally, in this classroom, we will see how to perform the practicals in the board examinations. Practical, it's a very important part, because we know, I have explained in the first class, introductions and the fundamentals, I have explained about the importance of practicals. Because बी अवेयर अबाउट दैट, स्कूल में पढ़ने वाले हर बच्चों को फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स नहीं मिलते हैं, क्योंकि रेंज ऑफ द मार्क्स इज गिवन बाय द एग्जामिनर 30, 29, 28, 27, 26, 25. रेंज ऑफ द मार्क्स इज गिवन बाय द एग्जामिनर. हम किस रेंज में आते हैं, अपर रेंज में कौन से बच्चे हैं जो अपर रेंज में आते हैं, क्या कारण है उसके पीछे कि अपर रेंज में हम मार्क्स लेके आए, वो सब कुछ बातें मेरे मतलब वो पूरा प्रोसेस, मतलब वी मस्ट नो द प्रोसेस ऑफ द प्रैक्टिकल्स, ताकि हम अपर रेंज के लिए स्ट्रगल हम फाइट कर सकें और उसी में आए. क्योंकि रिकवरी इज नॉट पॉसिबल 10, 15 और 20, क्योंकि हम जानते हैं, मैंने आपको एक्सप्लेन किया स्टैटिस्टिकल डेटा के थ्रू कि 130 मार्क्स प्रैक्टिकल, इंटरनल प्रैक्टिकल और मतलब इंटरनल असेसमेंट और प्रैक्टिकल मिला के बनते हैं मैथ्स के बच्चों के लिए, और 140 मार्क्स जो है वो बनते हैं बायो के बच्चों के लिए. तो बायो स्टूडेंट्स के लिए 140 मार्क्स और 130 मार्क्स मैथ्स के स्टूडेंट के लिए बनते हैं, और 130 या 140 में से हमें एक भी मार्क्स लूज नहीं करना है, क्योंकि अगर यहाँ पर हम इफ वी विल लूज द मार्क्स तो उतनी परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो वो प्रॉब्लमेटिक पार्ट है, और चूंकि रिकवरी पॉसिबल नहीं है इन मार्क्स की, तो हमारा प्राइमरी एम क्या होगा, फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स करना. एंड आज की क्लास में हम वही प्रैक्टिकल डिस्कस करेंगे कि किस कारण से या क्या कारण है कि किस प्रकार से बच्चों को मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एग्जामिनर किस प्रकार से मार्किंग करते हैं, और इन चीजों को ध्यान रखते हुए आप अपना प्रैक्टिकल परफॉर्म करें. क्योंकि वी डोंट हैव अ टाइम टू गो ऑन द ग्राउंड फॉर द प्रैक्टिसेस, टाइम भी नहीं है, IIT और मेडिकल के प्रिपरेशन के साथ में हमें वो टाइम नहीं मिलता है प्रैक्टिकल्स के लिए. तो विदाउट वेस्टिंग द इम्पोर्टेंट टाइम्स, हाउ यू कैन परफॉर्म द प्रैक्टिकल्स इन द मेन एग्जामिनेशंस, वो हमें सीखना भी है, और इन बारीकियों को या इन चीज़ों को ध्यान रखना भी है, ताकि हम परफेक्टली किसी भी एग्जामिनर को इम्प्रेस कर सके. ये ध्यान रखिएगा. Now, syllabus, this is the practical syllabus: fitness test, proficiency in the games and the sports, yoga practices, record file, viva in the voca, marks distributions are given. 6 marks का fitness test होगा, तो 7 marks में आप लोगों का games and the sports, 7 में yoga, 5 marks का viva and 5 marks का record file. ये सब कुछ प्रोसेस दिया हुआ है. आई विल एक्सप्लेन वन बाय वन. देखिए क्या होता है जनरली. डेट, क्योंकि लास्ट ईयर में कुछ डेट्स में अमेंडमेंट हुए हैं. 15 जनवरी जनरली 15 जन टू 15 फेब डेट होती थी, पर लास्ट ईयर से डेट में थोड़ा सा मॉडिफिकेशंस किया हुआ है. डेट इट इज द इश्यू ऑफ CBSE, व्हेन दे विल पब्लिश द डेट, वो डेट हमें फाइनलिस्ट ध्यान रखिए. जनरली जनवरी के फर्स्ट वीक में एग्जाम, हमें ये मान के चलने की प्रैक्टिकल्स एग्जाम होंगे. व्हेन द डेट विल इश्यूज बाय द CBSE, फर्स्ट ऑफ ऑल द एग्जामिनर्स दे विल अपॉइंट. एंड देखिए प्रॉब्लम क्या होती है, एक्सटर्नल एग्जामिनर विल अपॉइंटेड बाय द बोर्ड इन द 3 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट: फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजिकल एजुकेशन और बायो. There are the 4 or the 3 practical subject. इन चारों ही practicals में जो external examiner will appointed by the board, and nobody knows who was that person which was appointed. Generally, local examiner, all they are cooperative, they will support it now. So problem is not that. But if the external examiner, if they are outsiders, problem वहाँ possibilities है.
बनने की। अगर आउटसाइड एग्जामिनर होते तो हमें क्या ध्यान रखना है, इनसाइडर या लोकल कोई भी एग्जामिनर होगा तो हमें क्या और किन बारीकियों को ध्यान रखना है कि हम अपर रेंज के मार्क्स उन एग्जामिनर से ले सकें. So I will explain all the steps how to score the good marks in the practical examinations. First of all, the teachers which are appointed by the CBSE board, they will communicate with the school authorities and they will set the date. The range of the dates is given, 1 month durations is given. In a 1 month, all the subject exam they will fix the date and they will complete the practicals in the school. Suppose karo 8 times, many things. JEE mains examinations, first examinations will be held in this timing now, January. So after the mains examinations, the practical exams will be organized by the school. ध्यान रखिएगा. After that, after the communication of the examiners or the school authorities, they will fix the date and the batch number. देखिए जनरली क्या होता है कि एक बैच में 25 बच्चों से ज़्यादा अलाउड नहीं है. 25 स्टूडेंट्स दे आर अलाउड इन द वन बैच एंड एक दिन में 2 बैच जनरली एग्जामिनर ऑर्गेनाइज करता है. मतलब 50 स्टूडेंट एग्जामिनर विल कवर इन अ 1 डे. अगर किसी स्कूल में 200 बच्चे हैं, बाय द वे 200 हैं, तो क्या होगा 4 days आर रिक्वायर्ड. 4 days में प्रैक्टिकल प्रोसेस होंगे. कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा. सपोज करो 6 to 9 या 16 to 19 जनवरी. 16 to 19 January is the date of the practical examinations in your school in the physical education. आपका टर्न कहाँ आता है? 18 को मॉर्निंग में. मॉर्निंग सेशन में आपका टर्न है, चूंकि मॉर्निंग एंड आफ्टरनून देयर आर द 2 सेशन. टाइमिंग, डेट, बैच ऑल विल बी डिस्प्ले ऑन नोटिस बोर्ड. उनके अकॉर्डिंग आप अपना प्रैक्टिकल देखिए कहाँ आता है. 18 को है. चूंकि अब रूल चेंज हो गए. पहले क्या था कि अगर आपको 18 को सपोज करो कोई एग्जाम में कहीं जाना है तो आप जा सकते हैं. आप प्रैक्टिकल जो है स्कूल परमिशन लेकर के 16, 17, 19 इस रेंज में कहीं पर भी अरेंज कर सकते हैं स्कूल, और वो गेट दे सकता है. पर ये ध्यान रखिएगा, इफ यू हैव अर्जेंट वर्क यू कैन गो विद द प्रायर परमिशन ऑफ द स्कूल अथॉरिटीज. स्कूल अथॉरिटीज को ध्यान रखते हुए तो उनसे परमिशन के साथ में आप ये काम करें. लेकिन पहले के रूल थे कि डेट जो होगी वो इस रेंज में, बिफोर एंड द आफ्टर द प्रैक्टिकल विल नॉट बी अरेंज. जो डेट रेंज है, चूंकि ये एग्जामिनर देगा और एग्जामिनर के देने के बाद ही इट विल डिस्प्ले ऑन द नोटिस बोर्ड. तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम है कि 18 का प्रैक्टिकल था 16, 17 को, बट अब प्रॉब्लम क्या होती है, बैच का पूरा एक फोटो अलोंग विद द एग्जामिनर वो थोड़ा सा स्नैपशॉट लेना पड़ता है, वो सीबीएसई को भेजना पड़ता है. तो यहाँ बैच शिफ्टिंग में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस हैं. सो जिस दिन प्रैक्टिकल होगा आपको उसी दिन उसी टाइमिंग पर आपको स्कूल में अवेलेबल होना पड़ेगा. अब ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं. इसका सोल्यूशन क्या निकलता है, मे बी शायद कोई सोल्यूशन निकाले. कुछ स्कूल रिस्क नहीं लेते हैं, बिल्कुल दे आर अडमेंट, दे आर रिजिड के वी विल नेवर चेंज द बेस नंबर, बट विद द प्रायर. अगर आपको कोई अर्जेंट काम है, सपोज कोई 18 का प्रैक्टिकल है और इफ यू हैव अर्जेंसी, तो इन दैट कंडीशंस आप फिर स्कूल अथॉरिटीज को उसके पास जाएं, उनसे बात करें एंड दे कैन इफ दे विल चेंज तो देन वी कैन प्रोसीड नाउ. बट ये ध्यान रखिएगा कि ये जनरली after the fixations of this date, the school authorities, they will communicate with you through the mobiles, messaging, whatever. So they will give the message. Mobile which you have given, which number you have given in the school, वो थोड़ा सा ध्यान, वो अपडेट रखिएगा, क्योंकि कभी कभी बच्चों को मिसकम्युनिकेशन होता है या फिर कम्युनिकेट हो ही नहीं पाता बाय द वे, और वो एग्जाम मिस हो जाए. तो एग्जाम अगर मिस होता है तो प्रॉब्लम्स वहाँ हो जाती है कि if you will miss the examinations you are totally fail in the CBSE. आपको फेल होना पड़ेगा, क्योंकि सेपरेटली पास होना जरूरी है प्रैक्टिकल्स इन द थ्योरी एग्जाम्स में. सो ये ध्यान रखिएगा कि डेट, बेस नंबर, टाइमिंग है, उनके अकॉर्डिंग आप जाएं. कोई प्रॉब्लम होती है तो आप स्कूल अथॉरिटीज के पास सीधा जाकर के बात करेंगे, सर दिस इज द प्रॉब्लम्स, एंड दे विल फाइंड आउट द बेस्ट सॉल्यूशंस फॉर दैट. After the batch and the date, you just go along with the record file. Wear the school uniform. School uniform which is provided by the school, maybe the tracksuit. Inside the tracksuit, you have to wear the t-shirts, sport shoes. You have to wear it now and go in the school now. Your timing, your batch numbers, all you can see in the school. This is the practical timings in the batch. After that, the practical will be arranged. 25 students, they are standing on the ground. External examiner, they will come. First of all, they will form the different batches now.
different batches they will form it now. Generally event will be organized. First event जो है वो क्या है, fitness test. After that, the practical will be arranged. One more thing I want to tell you: if you have any problems like physical problems, whatever, so so you can talk to your internal teachers. They will guide you what you will do in the conditions. Suppose if you are having the problems like asthmatic patients, if you're having any injuries, so don't afraid it now. Directly just go and contact your internal teachers and tell the problems. They will suggest the ways how you can adjust in the practicals, and they can manage it now. But without informing you, if you will go, तो प्रॉब्लम हम आ जाती है, क्योंकि ये फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, फिजिकल टेस्ट होगा, और फिजिकल टेस्ट में हमें परफॉर्मेंस देनी पड़ती है ग्राउंड के ऊपर में, और उसी के मार्क्स मिलते हैं. देखिए एग्जामिनर, नोबडी नोज हु वाज दैट पर्सन हु इज अपॉइंटेड बाय द गॉड, नोबडी नोज. जनरली अगर कोई सॉफ्ट है टीचर्स, दे कैन एडजस्ट वेरी वेल, बट कभी कभी क्या होता है, आर्मी स्कूल, केवी स्कूल, मिलिट्री स्कूल, ऐसे टीचर्स जब आ जाते हैं वहां से, तो दे आर ऑडमेंट, आइडियलिस्टिक, तो वहां हमें प्रॉब्लम थोड़ी ज्यादा हो जाती है. तो ये ध्यान रखना है कि हम किस प्रकार से एडजस्टमेंट करें, वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है. पूरे प्रैक्टिकल प्रोसेस में मैं आपको वही बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको प्रैक्टिकल को फेस करना है. नाउ 25 स्टूडेंट्स दे आर स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड. फर्स्ट ऑफ ऑल रोल को लोगों अटेंडेंस होगी. आफ्टर दैट दे विल फॉर्म द बैचेस. नाउ 3 स्टूडेंट्स की एक रो बनती है और 3 स्टूडेंट्स दे विल परफॉर्म द डिफरेंट इवेंट. नाउ चलिए फर्स्ट जो टेस्ट होगा वो है फिजिकल फिटनेस टेस्ट. सिक्स मार्क्स का टेस्ट है. जनरली यहाँ एक प्रॉब्लम है. 6 मार्क्स फिटनेस टेस्ट, मोटर फिटनेस टेस्ट विच वाज गिवन इन यूनिट नंबर 6. ऑल द इवेंट्स यू कैन परफॉर्म इट नाउ. 6 इवेंट वहां पर हमें दी हुई है, वो आपको परफॉर्म करनी है. देखिए मैं इन 6 इवेंट तो वहां पर जो दी है वो इट्स डिपेंड ऑन द स्कूल विच इवेंट दे विल ऑर्गेनाइज. इट्स डिपेंड ऑन द, क्योंकि स्कूल तो एक सेम तो स्कूल है नहीं, डिफरेंट स्कूल है, तो डिफरेंट स्टेट, तो वहाँ ये है कि डिफरेंट इवेंट्स हमें वहाँ देखने को मिल सकती है. आई विल एक्सप्लेन सेपरेटली डिफरेंट टेस्ट हियर, डिफरेंट इवेंट आई विल एक्सप्लेन हियर. इनके थ्रू भी हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार से वो सब हमें परफॉर्म करना है. Motor fitness test, which was given in the unit number 6, I will not explain this now, but one different test which was organized by the CBSE in the previous years, I will explain here. Suppose करो in this now. जो first event है वो है 60 मीटर और the 100 मीटर रन. Teachers, excellent teachers, they will stand on the finishing line. 100-meter race, 60-meter race, you have seen in the schooling life, you can run very well. 3 students, they are running from the starting point. How the examiner will give the marks? Today you are the examiner. You can analyze yourself how you will give the marks to the children if you are examiner. Suppose karo you are standing in on the finishing line. 3 students, they are running from the starting point. अब आप देखिए क्या हो रहा है, 3 स्टूडेंट में से एक बच्चा बड़ा एनर्जेटिक वे में, बड़ा परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी है, बॉडी लैंग्वेज बड़ी अच्छी है, एनर्जेटिक वे में परफॉर्म कर रहा है, तो क्या हो रहा है, you can impress and you will mark the grade now. Whereas एक बच्चा बड़े lethargic मोड में देख इधर रहा है, जा इधर रहा है, he's performing the running, no body movement, no energy is seen in the body actions. तो can you impress it now? आपकी मार्किंग जो नेगेटिव मार्किंग होगी उसके प्रति. सो यही एक तरीका होता है, इंडिविजुअल एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज, परफॉर्म, हाउ टू परफॉर्म द actors on the ground. If you will impress the examiner, they can impress it now. The problem is that. तो यहाँ पर मैं एक्टिव इन्वॉल्वमेंट रखना है, परफॉर्मेंस बड़ी अच्छे से देनी है, ये ध्यान रखना कि एग्जामिनर को इम्प्रेस करना है. क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ क्या है, norms which are given by the CBSE, it's very typical. 100-meter रेस का अगर हम बात करें तो CBSE की वेबसाइट पर लिखा हुआ है, if the student will complete the 100-meter in 12 seconds, then the examiner will give the marks. 12 सेकंड में 100 मीटर कंप्लीट करना आसान थोड़ी है. It is India 6th place national sports mid timing. 9 point rating skills is there also there now.
सो इस टाइमिंग में रेस कंप्लीट करना आसान नहीं है, तो यहाँ प्रॉब्लम है। क्योंकि आसान इसलिए भी नहीं है कि जिन स्कूल्स में हम परफॉर्मेंस देते हैं उन स्कूल्स में ग्राउंड का सरफेस अनइवन होगा, मॉइस्चर्स होता है, ग्रासिंग कोर्स है, तो इन सरफेसेस पर तो टाइमिंग का दिन ही आसान नहीं है। तो यहाँ ये ध्यान रखिएगा, नॉर्म्स विल नॉट डिसाइड द मार्क्स, क्योंकि नॉर्म्स के अकॉर्डिंग तो मार्क्स को दे ही नहीं सकता। नॉर्म्स विल नॉट डिसाइड द मार्क्स, बट हु विल द एग्जामिनर, दे विल वॉच यू हाउ टू परफॉर्म द एक्टिविटीज, बॉडी लैंग्वेज, actions, all they will decide the marks. So by body language, by impressions, if you are impressed the examiner, so examiner can impress and they will get the full marks. So marking should be proper now. ये ध्यान रखिएगा, हमें impress करना है, so positively environment बढ़िया होना चाहिए, और 100 meter race सबको आती है, so directly we can perform the race on the same day. Number 2, shot put या फिर ओवरहेड, बैकवर्ड, बास्केटबॉल थ्रो with both the hands. One more thing I want to tell you, जिन इवेंट्स में चांसेस है इंजरी के, वो इवेंट हमें बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं करनी है। द ऑप्शंस आर गिवन, जनरली स्कूल खुद ही मतलब अपनी अकॉर्डिंग ही वो बड़े इजी इवेंट को ही इंक्लूड करता है, क्योंकि आफ्टर द फ्यू डेज यू विल फेस द मेन एग्जामिनेशंस। इफ देयर इज अ चांस ऑफ द इंजरीज या इफ यू आर इंजर्ड, तो नेचुरली प्रॉब्लम्स, पूरा का पूरा करियर दाव पे लगता है, पूरा साल हमारा प्रॉब्लम आता है। सो ये ध्यान रखना, शॉट पुट, नो नीड टू परफॉर्म दिस एक्टिविटीज, ओवरहेड, बैकवर्ड, बास्केटबॉल थ्रो विद बोथ द हैंड्स. What you will do, how to perform the activities, I will give the demonstrations about this now. Suppose this is the basketball. Hold the ball. Holding the ball is a technique. If you hold the ball like that way, this is the wrong technique. By separating the palms, facing backward, hold the ball like that way. You have to maintain the sufficient gap. The best principles are applying on the body. So you have to maintain the sufficient gap between the legs. Hold the ball like that way. Swing the body, get the momentum, and forcefully release the ball above the high surface. The distance will measure. Distance आप कितनी फेंक रहे हैं वो measure करेगा. This is the procedures. This is the procedures in this event, but forcefully thrust the ball down, swing the body, get the momentum. लगना चाहिए कि body movement है, body execution should be proper now. ये थोड़ा सा impression ध्यान रखिएगा, बेशक आप साल में कभी नहीं करें, कोई मतलब नहीं, पर on the same way you have to perform well. Execution should be proper, body language should be proper. वो distance कितना फेंका, 16 meter distance is required, लेकिन कितना फेंका उससे कोई मतलब नहीं, पर body language, body movement आपका कहता है वो सबसे important part होती है. सपोज करो एग्जामिनर आपने फेंका, एग्जामिनर ने क्वेश्चंस पुट अप किया, व्हाट शुड बी द एंगल ऑफ प्रोजेक्शंस इन दिस इवेंट फॉर गेटिंग मैक्सिमम डिस्टेंस, व्हाट शुड बी द एंगल ऑफ प्रोजेक्शंस फॉर गेटिंग ए मैक्सिमम डिस्टेंस इन दिस इवेंट. Mostly students, they will speak, so 45 degrees is required. No, this is the wrong answer. ध्यान रखिएगा, for the 45 degree what we are required, the landing and the throwing surface same are required for the 45 degree. The landing and the throwing surface, both the surfaces are same are required, but in this event we are releasing the ball from the above the head height and the landing is downward. Landing यहाँ और ये this is the base and the projectile will be counted here like that way. So ये यहाँ पर angle will be counted from this place. So height relevance is one of the factors which will decide the angle of projections. ये जो हाइट है वो रिलेवेंस है, वही तो एक सबसे बड़ा फैक्टर है जबकि आपका एंगल डिसाइड करा, चूंकि लैंडिंग इज डाउनवर्ड हियर. So less than 45 is the right answer of this questions. We cannot calculate the angle on the spot. So less than 45 is the right answer. Sir, if you will give the answering like that way, you can impress the examiner. Examiner को आप impress कर सकते हैं अगर आप ये तरीका भी ध्यान रखिएगा. और ये इंप्रेशन स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन है. फिजिकल इंप्रेशन, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन प्रैक्टिकल में फिजिकल इंप्रेशन तो इंपॉर्टेंट पार्ट है ही सही, पर ये जो इंटेलेक्चुअल या वर्बली इंप्रेशन होता है जो आंसरिंग के थ्रू हमें देना चाहिए, वो भी स्ट्रॉन्ग पार्ट है इस सब्जेक्ट में. सो दिस इज द सेकंड नंबर इवेंट. नंबर थर्ड, लॉन्ग जंप, वर्टिकल जंप या फिर स्टैंडिंग ब्रॉड जंप. नहीं करना लॉन्ग जंप, देयर इज अ चांस ऑफ इंजरीज.
impacted fractures, there is a chance of injuries. क्योंकि फिटनेस नहीं है तो हमें नहीं करना चाहिए. वर्टिकल जंप क्या होता है? Mark the highest, dip the hands in the chalk powder, mark the highest point on the wall, highest point mark किया. Now swing the body, standing in the, running in the, jumping are not allowed. Swing the body, standing here. Jump it now, jumping point. Difference between the 2 points, this is called the vertical jump of yours. स्कूल में प्रोविजंस नहीं होता है. स्टैंडिंग ब्रॉड जंप इज सिंपल इवेंट. ये सिंपल इवेंट है. इन दोनों में से कोई सी भी एक इवेंट है. स्टैंडिंग ब्रॉड जंप देखा हुआ है आप लोगों ने. यू कैन स्विंग इट नाउ. ये swing the body, get the momentum and forcefully jump it now. Distance will be distance कितना है? Momentum gain कीजिएगा. एक दो बार swing किया, body movement लगना चाहिए कि हम standing broad jump परफॉर्म कर रहे हैं. ये ध्यान रखिएगा. मूवमेंट शुड बी, वो मूवमेंट इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए. स्किनिंग ब्रॉड जंप सिंपल इवेंट है, आप कर सकते हैं. वेयर नंबर 4th इवेंट कौन सी है? कोई सी भी, वो सिटअप्स या पुशअप्स. Maybe the sit-ups or the push-ups. You can perform it now. Sit-ups आपने देखे हुए, crunches या push-ups both the events I have explained the unit number 6. 6 नंबर में डायग्राम के साथ में एक्सप्लेन किया हुआ है. एंड यू कैन परफॉर्म वेल. सेटअप्स जनरली एग्जामिनर्स all will come here now. All they will be assembled on the basketball court. The setup is compulsory for you. All are agree. Almost all are agree now. Generally, different types of examiners we can see. One of the examiner. Okay, now we are required the pairing now. 25 students, 24. It means 12 pairs. We can form it now. 1 hour left. Internal teachers or the demo boys, they will come and they will complete the 13 pairs. 13 students, they will perform on the ground. Basketball court, smooth surface, plain surface are available, so we can perform well. The examiners, they are watching you. Simple event. Otherwise, some of the examiner, they will call you one by one and perform separately. So, it depends on the examiner how they will manage, how they will organize the event on the ground. But sit-ups and the push-ups, how many you can perform? जितना आप कर सकते हैं उतना कीजिएगा, because norms are written 40 to 45 sit-ups or the push-ups you have to perform on the ground. It depends on you whether you can perform the 20, 25 marking. उसके साथ according चलती है जो आप चलते हैं कि कितना perform किया. If you are energetic, if you are fit now, you can perform better. You can impress the examiner very well. यहाँ ये पर ध्यान रखिएगा. Whereas number C, last events, shuttle run. 4 into 10 meter. I have explained in the unit number 6 now. This is the command. Maybe these 5 events, maybe the motor fitness test is the event which was written in the unit number 6. Maybe the mixed event of these 2 tests. The school authorities, they will manage, they will organize the fitness test. कोई सी भी 6 इवेंट वो यूज कर सकते हैं अपने हिसाब से और उसी के बारे में आपको परफॉर्मेंस देनी पड़ती है. बट इन ऑल द इवेंट इन द स्कूलिंग लाइफ वी हैव परफॉर्म ऑल दीज इवेंट, सो डायरेक्टली वी कैन परफॉर्म दीज इवेंट. बट द प्राइमरी मोटोज इम्प्रेस द एग्जामिनर, इम्प्रेशंस ओनली इन द गेम्स इन द स्पोर्ट्स, ओनली द फिजिकल इम्प्रेशंस विल बी काउंटेड. सो इफ यू आर नॉट फिट और दीज आर नॉट द लेबरस या हेक्टिक activities, they are very simple activities, and after performing the warming up, you have to perform all these events. You can perform all the event very easily on the ground. So on the same day of the practicals, we can perform well. No need to go to waste the timings now. We can perform very well. This is the fitness test. Any 5 to 6 event the school will organize. वो ध्यान रखिएगा उसके हिसाब से अपने आप, क्योंकि school authorities they will first of all they will inform you कि these are the events which we are organized on the ground. First of all they will give the demonstrations about the activities also now. So this is the first number test. चलते हैं हम चलते हैं syllabus की ओर. Now, second number test, proficiency in the games and the sports. The game, one game you have to choose it now. Games, these are the games: basketball, football, kabaddi, kho-kho, volleyball, handball, hockey, cricket. And these are not the game for you. CWC and children's games here. So these are. Any one game you can choose it now. The problem is that if you are a national player of the badminton, but it is not in the syllabus, is it not possible to of the command and control in a one game in a 1 year? So remember these things.
Any one game, you can choose it now. The skills of the games, we will perform on the ground. मतलब हमें complete game नहीं खेलना है, skill performance होगी. Volleyball, लेव शॉट, अंडर इन सर्विस, एग्जामिनर आपसे बोलता है वो परफॉर्म किया ना. ये ध्यान रखिएगा, स्किल परफॉर्मेंस टेस्ट है. यहाँ पर पूरा गेम नहीं खेलना पड़ता. बास्केटबॉल, ड्रिबलिंग, शूटिंग, 3 पॉइंट, लेव शॉट, हर गेम की स्किल्स हैं, उनके अकॉर्डिंग ये परफॉर्मेंस होगी. सो दिस इज द वेरी सिंपल. वी हैव प्लेड द गेम्स, सो उनके अकॉर्डिंग. बट ये ध्यान रखना, जो खेलना आता है वो ले. इफ यू हैव प्लेड द फुटबॉल गेम्स, सो चूज द फुटबॉल गेम्स. But first of all, consult with the school teacher also. But suppose schools are not having the playground of football, so how they will offer you? So this is the biggest problems. First of all, communicate with the teachers and also take the suggestions of there, so they will manage it now. But you have to perform the skills only the skills in the games, in the sports. Whereas the third number, yogic practices, yogasan. In the unit number 3, we have seen the multiple yogas, images, exercising yogas, and we can perform well. Tadasana, Padmasans, they are the exercising yogas and which we have performed in a daily life. But images, you must know, 7 to 8 asanas you will perform on the ground. Examiner will call you one by one, and on the floor you can perform the yogasanas. It's a very simple image. Images are also given, and you can maintain the pose on the ground. Slowly, you can perform the yogasanas. These are not the exercises. Yogasanas poses, slowly you have to perform on the ground in front of the examiners. Diagrams is also given in the booklet, and you can see all these diagrams and you can make the pose, because all they are the exercising yogas. Now, record file and the Vaya Voca. Record file. These are the contents in this year. These are the 3 practicals you have to write. First of all, fitness test, 6 number chapters. As it is, you can copy it now. बुक में जो कॉपी दिया हुआ है, एज इट इज यू कैन कॉपी इट नाउ. प्रोसीजर्स ऑफ आसनास, बेनिफिट एंड द कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑफ एनी 2 आसनास फ्रॉम ईच लाइफस्टाइल. मतलब 4 लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स जो हमारे सिलेबस में दी हुई है. भाई बैक पेन को रिमूव किया हुआ है. बैक पेन के अलावा हाइपरटेंशन, अस्थमा, डायबिटीज एंड द ओबेसिटी. ये जो 4 लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स हैं, इनके आसन के बेनिफिट, कॉन्ट्राइंडिकेशंस ये हमें लिखना है. एज इट इज मटीरियल्स आर गिवन इन द यूनिट नंबर 3. तो 3 नंबर से आप कॉपी करके यहाँ आपकी फाइल में पेस्टिंग कर लें, काम चल जाएगा. Whereas नंबर 3, एनी वन गेम, जो भी गेम आप चूज कर रहे हैं वहां उस गेम को एज इट इज कॉपी करना है. भाई हिस्ट्री, ग्राउंड डायमेंशंस, रूल्स, रेगुलेशंस, एवरीथिंग विच आर गिवन इन द प्रैक्टिकल फाइल, यू हैव टू कॉपी इट नाउ. ये तीनों ही प्रैक्टिकल्स आपकी फाइल में अवेलेबल है. बस ध्यान रखिएगा कि आपके स्कूल में कौन सी पब्लिशर्स की फाइल को यूज किया हुआ है, उस फाइल में हमें कॉपी करना है और वो हमें यूज करते हैं एग्जाम में अपने आंसर, ये सब कुछ प्रेजेंट करना है. जहां पॉसिबल हो कलर डायग्राम्स अगर आपको अवेलेबल हो जाए तो आप यूज कर लें उनको. पेस्टिंग करके थोड़ा सा डेकोरेशन कर लें, थोड़ा सा कलरिंग, थोड़ा सा ये, इन पर हमें थोड़ा सा और फोकस करना है इस सब्जेक्ट में. इस सब्जेक्ट में हमें ये ध्यान रखना है कि हम फाइल में थोड़ा सा डेकोरेटिव वर्क कर लें तो हमारा फाइल प्रिपेयर हो जाती है. सो दीज आर द practicals in the practical file. All are available in the book or practical file, so you can copy it, the material whenever you have a time. You just copy it now so that we can we can complete the times within the timings now. So this is the practical process. Generally, impressions, physical impressions, active involvement, they are the main tools in the physical examinations. So this is the very simple process for the practicals. I think so. If you will impress the examiner, if the examiner will impress, they will give the marks. The range of the marks will decide by the external examiner, if you will impress the examiner in the physical education practicals, we can impress the examiner very well by active involvement. So this is the main tools of the practicals. This is the end of the syllabus now and the practicals now. और आई थिंक सो मैं समझता हूँ कि इस सब्जेक्ट में हमें थोड़ा सा भी ध्यान रखना है कि जब हम प्रैक्टिकल में इम्प्रेशन के बाद अगर हम थ्योरी की बात करें तो थोड़ा सा इम्पैक्ट जो है कि कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है कि ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ये इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं है, ये फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट है. और फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट में हमें थोड़ा सा इम्प्रेशंस बिल्कुल अलग प्रकार से ही मैनेज करना होता है, क्योंकि ये
यहाँ पर प्रेजेंटिंग फॉर्मेट आंसर की लेंथ को एक्सीड करना हुआ है, जितना अच्छा आंसर आप बना के देंगे, जितना लेंथ होगा वो सब कुछ फॉर्मूलाज में यूज करने पड़ते हैं जो कि अदर सब्जेक्ट में एप्लीकेबल नहीं है. सो ऑल द स्टेप्स विच आर यूजिंग ओनली इन दिस सब्जेक्ट इट इज एप्लीकेबल. हर सब्जेक्ट में ये एप्लीकेबल नहीं होगा. आई थिंक सो. वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू. इस साल पेपर का पैटर्न चेंज हुआ है. पेपर में 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स इन द 5 मार्क्स क्वेश्चंस जो है वो इंक्लूड किए हुए हैं. लास्ट ईयर 1, 3 इन द 5 मार्क्स था. 1 to 12 क्वेश्चंस जो है वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म पर हैं. उसके बाद 4 क्वेश्चंस 2 मार्क्स के, 10 क्वेश्चंस 3 मार्क्स के, इन द 4 क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स के. ये पैटर्न रहेगा. थोड़ा असर्शन, रीजंस, केस स्टडी, ऐसे क्वेश्चंस को थोड़ा सा यूज किया हुआ है. पर डीपली व्हेन आई एनालाइज द पेपर्स, इट्स वेरी इजी नाउ बिकॉज इजी ही सेक्शन है. कोई टिपिकलनेस नहीं है, और जब बारीकी मैंने आपको बताई है उनको यूज करते हुए आप अपने आंसर्स बड़े अच्छे से फॉर्म हो सकते हैं. बट हमें हाई एक्यूरेसी की रिक्वायरमेंट है क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हाई एक्यूरेसी से ही हमें सोल्व करने पड़ते हैं. मतलब यहाँ 0.1% भी एरर हुआ तो हम क्वेश्चन का आंसर गलत कर सकते हैं, वो ध्यान रखना है. सो हाई एक्यूरेसी की रिक्वायरमेंट है. पहले की तरह ट्रेंड चेंज हुआ. पहले के क्वेश्चन आंसर का तरीका बिल्कुल डिफरेंट था. We will suggest you how to solve the questions, how to write the papers. We have suggested you in the classroom how to write the papers, how to explain all these now. But ये ध्यान रखिएगा क्योंकि ये एक सब्जेक्ट ऐसा है जहां पर हमने आज तक कभी कोई पेपर नहीं दिया हुआ है, न हमें पुराना एक्सपीरियंसेस है. सो ये जो स्टेप्स क्लासरूम में आपको एक्सप्लेन किए गए थे इनको यूज करते हुए अपना आंसर हम बनाएंगे.